welcome back to study panel. This is Devendra Sejala from Kendriya Vidyalaya Rajkot. In today's video, we shall start the second part of the poem Sing a Song of People. Dear students, if you have not watched our part 1 of this poem, by clicking on the link over here, you can watch part 1. Now let us move on to the exercise direct. See students, you have done this activity in your maths chapter 8, that is mapping your way. Now on in that chapter, what you did, you have to find out the road on the basis of map. So in this activity also we are going to do the same thing. This is a map. You can see, first of all, we will observe this map very carefully so that we can answer the questions that will be asked on the basis of the map. You can see this is Ajay's house and this is a route by which Ajay is going to his school. This is Ashoka Road. This is Ajay's grandmother's house. This is Kasturba Gandhi Marg. This is boat club. This is school. This is picnic area, and this ring road is passing by Ajay's house. So let us move on to the question answers on the basis of this map. Now the first question, what does the dotted line on the map show? See, here you can see this is dotted line. What does it show? So let us see. It shows route from Ajay's house to the school. We can see here this dotted line shows the route of school from Ajay's house. This is school. Okay. Come to the second question. What road would Ajay take to get to the boat club? Now see, this is boat club. So Ajay will take Kasturba Gandhi Marg to reach boat club. So the answer is Kasturba Gandhi Marg. What building is next to the picnic area? Here we can see, here there are two buildings near the picnic area. One is India Gate, but this is only written, so there is no building. And here this is a building, that is school building. So here we will write इंडिया गेट, और यू कैन ऑल्सो राइट इट हियर स्कूल बिल्डिंग. इंडिया गेट आंसर हो सकता है, लेकिन इंडिया गेट की जगह पर मैप में जो है कोई पिक्चर नहीं दिया हुआ है, कोई बिल्डिंग नहीं दिया गया है. तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पर हम लोग जो है वो क्या लिख देंगे, स्कूल बिल्डिंग जो है हमारा आंसर आएगा. आप लोग यहाँ पर स्कूल बिल्डिंग लिख सकते हैं. ओके, डन. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. व्हाट रोड passes by Ajay's house? See, this road is passes by Ajay's house. This is starting, Kasturba Gandhi Marg is starting from Ajay's house. This Ashoka road is also starting by Ajay's house. So this road only, this ring road is passing by Ajay's house. So the correct answer is ring road. Next question. What other way could Ajay use to get from his house to grandmother's house? So let us find out what are the other routes by which Ajay can reach to his grandmother's house. This is the one road we can see, Ashoka Road. So this is the first one. And the second one is, if Ajay uses his route to the school, this one, and from here Ajay can take this Ashoka Road and reach grandmother's house. Now here also we can take, if Ajay takes this Kasturba Gandhi Marg, but there is no road in this area, so Ajay will not take this one. If he uses boat and cross this boat, this lake, then he can reach to his grandmother's house. But this is not feasible, so we'll write this one only. Ajay's school route will be most applicable to reach her grandmother's house. So let us see the answer. Ajay could take Ashoka Road to get his grandmother's house from his house. He could go through that. Ashoka Road is a common road which is going to his grandmother's house. He could go through his school route, and after reaching to the school, he can take Ashoka Road after walking a few steps and reach his grandmother's house. Now see, here we will see use verbs like go, turn, cross. Use prepositions like across, between, in front of, beside, near, behind, and right. How you get home from school. Now first of all, we have to learn about what are the actual meaning of these prepositions and where we have to use
So let us see about it. Let us see the first preposition, across. Now, what does it mean and when do we use this? Across means on the other side of something, or from one side to the other of something which has sides or limits such as a city, road or a river. The example is I ran across the street. Means यहाँ पर across हमें कब यूज करना है, कब preposition across का सेंटेंस में यूज होता है? जब किसी भी चीज की कोई लिमिट्स हो, जैसे सिटी है, सिटी की एक लिमिट रहती है कि ये उसकी बॉर्डर्स है, इसके बाहर जो है वो सिटी नहीं रहता है। रोड होता है, उसकी भी एक लिमिट होती है, जैसे आप जहां पर रहते हो वहां किसी स्ट्रीट में या गली में उसका दोनों एंड आ जाता है कि उसके आगे जो है वो स्ट्रीट रहती है नहीं। रिवर जो है, रिवर का भी जो है एंड रहता है, उसका जो है शुरुआती ओरिजिन रहता है और एंड रहता है। तो ऐसी जगह पर ही जिसकी लिमिट्स रहती है वहां पर हम लोग अक्रॉस यूज कर सकते हैं। आई रैन अक्रॉस द स्ट्रीट। Second one, between. This preposition is the most common that we use in our day-to-day life. Between is often used to refer to the time, space, or differences that separate two things: people, places, ideas, etc. Actually, between is used to separate or to find out the difference between two things. It may be a difference between the two people, two places, two ideas. Okay, now let us see the example. We should leave between 9 and 10 o'clock. हम लोग 9 और 10 बजे के बीच में चले जाएंगे। तो ये जो है इन दोनों के बीच में निकलना है। अब आप 9:30 को भी निकल सकते हैं, 9:45 को भी निकल सकते हैं। We stood, he stood between his mother and his father. Means that person is standing between his mother and father. उसके माता पिता के बीच में जो खड़ा है। Like this we will use between in our day-to-day life. Now, how to use in front of? The man with the purple eyes knelt in front of her. Now, अगर आप किसी चीज को सामने, जैसे if your teacher is teaching you, then we can easily say that your teacher is standing in front of the students. So here we will use in front of the students, यानी वो बच्चों के सामने खड़ा है। Your blackboard or your green board is in front of the students, क्योंकि वो उनके सामने ही आता है। See, what is the meaning of this? Knelt. Knelt is past participle or V3 form of kneel. Kneel means kneel down, जो हम लोग कहते हैं ना घुटनों पे बैठना, that is kneel, and this is past participle, so V3 form knelt in front of her. Let us move on to the next, beside. Beside is a preposition that means next to or at the side of. He sat beside me in front seat. ना उसके बाजू में बैठना जब है तब हम लोग क्या यूज करेंगे? beside. ओके, उस समय हम लोग क्या यूज करेंगे? beside का यूज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, नियर. Near is also very common word, very common prepositions we are using in our day-to-day life. The car parked near the windmill. The car parked near the windmill. This is very simple. Now the last one, behind. At or to the back of someone or something. अगर किसी के पीछे कोई चीज होती है, सी दैट पर्सन इज स्टैंडिंग बिहाइंड द टेबल, दैट पर्सन इज सिटिंग बिहाइंड द बेंच. लाइक दैट वी कैन use behind in sentences. The example is given, shut the door behind you. You have to shut the door which is exactly behind you. So like that, this we will use behind. Now what you have to do here, your homework is that you will write the sentences using these prepositions. अगर इस प्रीपोजिशन का क्या मीनिंग होता है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको ये जो प्रीपोजिशन का यूज करके जो है एक पैराग्राफ बनाना है। चाहे तो आप कोई और रेफरेंस भी ले सकते हैं, जैसे आप स्कूल से घर आ रहे हो उस समय का पैराग्राफ आप लोगों को लिखना है, बशर्त यह है कि ये प्रीपोजिशंस 1 2 3 4 5 और 6 प्रीपोजिशंस आपको यूज करने हैं। नाउ लेट्स लिसन. Do you like to float paper boats? Of course, every one of us like to float paper boats whenever it is raining. Listen to the poem given below. Day by day, I float my paper boats. Day by day, I float my paper boats, one by one down the running stream.
in a big black letters I write my name on them. वो क्या करता है कि जब रेन होता है उस समय स्ट्रीम जब जैसे झरना जैसा जाता है पानी, तो उसमें क्या करते हैं अपनी पेपर बोट बनाते हैं और उसके ऊपर ब्लैक लेटर्स, बिग ब्लैक लेटर्स में क्या लिखते हैं, उनका नाम लिखते हैं, हमारा नाम हम लोग बोर्ड के ऊपर लिख देंगे। एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव, और साथ में ये भी लिख देंगे कि हम लोग कहाँ पर रहते हैं। आई होप दैट समवन इन some strange land will find them and know who I am। वो जिसके हाथ में कोई स्ट्रेंज लैंड में बहते बहते पानी में जाएगी बोट, अगर किसी के हाथ में आएगी तो उनको पता लगेगा कि ये जो है कहाँ से आई हुई है। आई लोड माई लिटिल बोट्स विथ ट्यूली फ्लावर्स from our garden। See, this is a picture of tulip flower, you can see here, this is a picture of tulip flowers के साथ इसको लोड करके भेजना है। and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night। Okay, so this poem is written by Ravindranath Tagore। Okay, now let us move on to the next। discuss with your partner how you would send a similar messages to someone। See, nowadays the communication has become an unseparable part of our day-to-day life। Now see how it has become, because we are having a cell phone, we are having WhatsApp, we are having Facebook messengers, Instagrams, and many more we are having to communicate with one another। Now I would write a similar message on a piece of a thin paper and then I would wrap it in a small poly bag and send it। अब ये क्या कर रहा है, जो छोटी सी पॉली बैग में मैं छोटे एक पेज में लिख लूंगा पतले से पेपर में, और उसको एक पॉलीथीन का जो बैग होगा उसमें डाल के हम लोग भेज सकते हैं। Also find out how people sent messages in olden days and how they send them nowadays। See, in olden days people used pigeon to send messages। there were postmen, nowadays also postmen are there। लेकिन पहले जो लोग घोड़े पे जाते थे और एक जगह से दूसरी जगह पर जो है मैसेजेस देते थे। in olden days they sent messages through messengers and pigeons। nowadays messages are sent by post, telephones, mobile phones and emails। अभी तो ये सब इतना स्पीड हो गया, इतना तेज जमाना हो गया है। आप बाय पोस्ट करिए, अगर कोई पार्सल वगैरह भेजना है तो कुरियर करवा दीजिए, एक दिन में पहुंच जाएगा, 2 दिन में पहुंच जाएगा। बहुत अर्जेंट है आप कॉल कर लीजिए, मोबाइल से भी कॉल कर सकते हैं, और ज्यादा कुछ फाइल्स वगैरह भेजनी है उनको तो आप उनको मेल भी कर सकते हैं। लाइक दिस वी कैन डू। नाउ come to the next। See, observe this picture very carefully। Let's write, see the picture, travel time below, answer the question that follow। You can see this is a picture। Let us see to the question answer। Where did you go for an excursion or holiday? See, these questions will be answered by your own। You have to, आपको जो खुद ही आंसर देने हैं इसके, कि आप लोग कहाँ गए थे एक्सकर्शन के लिए या हॉलीडे के लिए, आप करके या परिवार, सब परिवार के लोगों के साथ कहीं गए थे क्या। सो दैट यू हैव टू राइट हियर। विथ whom did you go, किसके साथ आप लोग गए थे, दैट ऑल्सो यू हैव टू राइट। व्हाट वर द फैमिली मेंबर्स वर विथ यू व्हेन you were on holiday or excursion। what did you take with you? See, what are the materials you have taken with you? Your clothes, toothpaste, toothbrush, mat, whatever things you have taken with you, you have to make a list of that things and you have to write it down here। what was the first thing you saw when you reached your destination? See, आप जहां पर गए थे तो सबसे पहले वो डेस्टिनेशन यानी जो आपका पिकनिक का पॉइंट था, वहां जाके आपने सबसे पहली चीज कौन सी देखी थी, तो वो आपको इसके आंसर में लिखनी है। What did you like best about the place? वहां पर आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी, बट which was the best that you like the most at that particular place? How long did you stay there? Was it planned for a 2 days, 3 days or a week or a 15 days? बस इससे ज्यादा तो कोई 15 डेज से ज्यादा बहुत कम लोगों का प्लान होता है। वहां कितने दिन आप रुके थे वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। What did you miss about home? घर के बारे में, जब आप पिकनिक पे गए थे तो घर के बारे में आपने क्या क्या चीजें मिस की, वो यहाँ पर लिखनी है। सी दिस यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, सो यू हैव टू राइट डाउन बाय योर ओन। नाउ लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन 4। look at the following words, they are group names। now here you can see we are using certain words for explaining or of telling about certain group of people। suppose if it is a group of soldiers, we will say that it is a troop, it is a troop of soldiers। now if it is a group of bees, then we will say it is swarm of bees। if it is
group of players, then we will say team of players. If it is puppies, group of puppies, then we'll say litter of puppies. If it is ships, then we will say fleet of ships. If it is a book, then library of books we will say. Now here also we are having some options and we have to use this option to fill in these 6 blanks. So let us see. The travelers rested under the dash of trees. So here we will use clump of trees, means it is a group of trees. Then the second one, the dash sang beautifully. So no, we all know that in our school also there is a certain group of students who are singing the poems. Nowadays it is not possible due to the corona barriers. Otherwise, in our school also there are certain group of people who always sings prayers on the stage, and the whole school will follow them. So what do we call that group? That group is known as choir. So the choir sang beautifully. The third one, the dash of flowers was lying on the table. We will use, this is bunch. So we'll use bunch for it. The bunch of flowers was lying on the table. The next one, the girl looked up at dash of stars. See, cluster of stars. See, whenever we are talking about, there are with the help of 5 or 7 stars, a group of stars are uh, come to each other. At that time, they will meet a group of stars. So that group will known as cluster of star. Now come to the next, fifth one. The dash of robbers escaped. Here we'll use band. जो जो चोर होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उनको क्या कहा जाता है? बैंड. द बैंड ऑफ रोबर्स एस्केप. द हंटर शॉट एट द डैश ऑफ बर्ड्स. इट इज फ्लॉक ऑफ birds. This is the last option, so we'll choose this one. Come to the next activity. Some words describe actions. Many of them end in ly. Like one is done for us. The girl danced beautifully. See, this, the word is beautiful. These are the describing the actions. So now if these words are ending with ly, they will add more meaning to the particular word. Now fill in the blanks by changing the word in the brackets suitably. Now let us see. Here we are having some words, so we have to add ly after that word, or ly as suffix. So let us add, the girl slept soundly. This is ly after this sound. The children finished their work. Actually the word is quiet, so sorry, it is quick, so we will write it quickly. The children finished their work quickly. Old man shouted loudly. You can, if you know the answer, you can write this for quiet, neat and easy in the chat box. The boys played quietly. Do your work neatly. I can do the sum easily. Okay, see, this is why we have converted into I and added ly. Now let us move on to the next activity. Fun time. Which country would you like to visit when you grow up? Make a project by drawing or pasting. See, जब आप बड़े हो जाएंगे तब आपकी इच्छा क्या रहेगी कि आप कौन सा कंट्री विजिट करना आपको सबसे अच्छा लगेगा और पसंद होगा आपको. सो देखते हैं, मैप ऑफ दैट कंट्री, इट्स नेशनल फ्लैग. यानी यहाँ पर जो है उस कंट्री का आपको मैप बनाना है या पेस्ट कर देना है, और उसका नेशनल फ्लैग क्या है उसको भी आपको ड्रॉ करना है. स्टैम्प्स ऑफ द कंट्री एंड इट्स करेंसी. स्टैम्प्स मतलब जो पोस्टल स्टैम्प्स वो यूज होते हैं, है ना, पोस्ट में डालने के दौरान, वो उसके स्टैम्प्स एक दो आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं. और उसमें करेंसी कौन सी यूज होती है? सपोज इफ यू विश टू विजिट द यूएसए, देन यू विल राइट डॉलर. इफ यू विश टू विजिट England when you grow up, so you will write it here pound. So जो करेंसी उस कंट्री में यूज होती है वो करेंसी यहाँ पर हमें लिखनी है. सम फेमस मॉन्यूमेंट्स और लैंडमार्क्स. यानी उस कंट्री में जब आप विजिट करने जाओगे तो वहां आप कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स या लैंडमार्क्स देखोगे वो यहाँ पर लिखने हैं. Okay, so this you have to do by your own. Do it yourself. Now this is very important.
This is very knowledgeable also. Let us increase our knowledge by learning this. Do you know that there are 7 wonders in the world? We all, दुनिया में जो है सात अजायबी है. So कौन कौन सी है उसको देखते हैं. Can you tell the name of the one which is in India? Yes, of course we can tell one, because Taj Mahal is one of them which is in India. So we know that. Find out and write the names of all 7 wonders and the countries they are located in. हमें यहाँ पर जो है वो 7 जो अजायबी है दुनिया की, उस सबको यहाँ पर लिखनी है, और वो जो है कौन से कंट्री में है वो भी हमें यहाँ पर लिखना है. So let us see the first one. This is Taj Mahal. It is located in India. Okay, and this is the second one, the Great Wall of China, which is in China. This is the Great Wall of China. The third one, this is Roman Colosseum. It is situated in Italy. The next one is Petra, which is situated at Jordan. This one is Machu Picchu. It is situated in Peru. तो माचू पिच्चू जो है ना, ऐसी जगह पर, इतनी हाइट पर, इतने पहाड़ पर है, यहाँ पर पूरा सिविलाइजेशन था, ताकि यहाँ पर कोई पहुंच न पाए, कोई उनके ऊपर अटैक न कर पाए. ये बहुत अच्छी जगह है. Actually, this is in South America. This one is Chichen Itza in Mexico. This one is Christ the Redeemer in Brazil. This is a statue of Jesus Christ. So these are the total 7 wonders of the world. Okay, so you can write it in your notebook. There is no need to draw this. Now let us move on to the things that what you need to write in your notebook. We'll find it out what you have to write in your notebook and what activities you have to do in your notebook. So let us move on to that. Okay, we'll start it from the first one. दिस इज द पिक्चर. यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे. देखो, अगर आप चाहे तो इस मैप को अगर ड्रॉ करना चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं. अगर मुश्किल हो रही है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको ड्रॉ मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं है. लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन आंसर्स, दिस यू हैव टू राइट ऑल 1 to 4 ऑल क्वेश्चन आंसर यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. सभी लिखने हैं. ये सभी क्वेश्चन आंसर्स जो है आपको कहाँ लिखने हैं? अपनी नोटबुक में लिखने हैं. कम टू दिस नेक्स्ट वन. ये भी जो है आपको पूरा लिखना है, और ये भी जो है आपको पूरा लिखना है. देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप लोग घर से स्कूल कैसे आते हो, वो लिखने के लिए आपको ये सारे प्रीपोजिशंस का यूज करना है. ठीक है, तो वो आपको अपने आप ही लिखना है. दिस यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. ये सारे प्रीपोजिशंस जो है यहाँ पर यूज होने चाहिए और आपको लिखना है. नाउ दिस वन ऑल्सो यू हैव टू राइट. ये जो है सबका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है प्रीपोजिशंस का, ये तो सभी लिखने हैं आपको अपनी नोटबुक में. ये सारे जो है 6 तो दिए हैं, ये सारे लिखने हैं आपको अपनी नोटबुक. Come to the next one. This poem also you have to write it in your notebook. No need to draw this picture. ये जो लड़के का ड्राइंग है उसको बनाने की कोई जरूरत है नहीं, तो इसको काट देंगे. Come to the next one. हाँ, ये फ्लावर भी जो है इसकी भी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम इसको भी काट देंगे. इसको भी काट देंगे, कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. Now come to the next one. This, yes, this you have to write in your notebook, both the questions. This is 1 and this is 2. ये दोनों क्वेश्चंस आपको लिखेंगे. ये पूरा जो ड्राइंग है आपको बनाने की जरूरत है नहीं. आप क्या कर सकते हैं, ये लेट्स राइट हेडिंग डाल दीजिए, ये 1 लिख दीजिए, और आफ्टर राइटिंग दिस वन यू विल राइट दिस क्वेश्चन आंसर बाय योर ओन. ये आपको अपने आप ही लिखने हैं. तो इसको सोच समझकर इसका आंसर सभी जो है 1 to 7 दिए हैं, सभी आपको लिखने हैं. कम टू द नेक्स्ट वन. ये पूरा आपको लिखना है. ये ड्राइंग बनाने की, देयर इज नो नीड टू मेक दिस ड्राइंग. ये भी पूरा आपको लिखना है. ये ड्राइंग को काट दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है. ये पूरा आपको यहाँ पर लिखना है. ये देखो, इसके आंसर्स भी है यहाँ पर, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं. ये भी जो पूरा पेज है आपको पूरा पेज अपनी नोटबुक में लिखना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको काट देंगे हम लोग. तो ये पूरा जो है आप लोग अपनी नोटबुक में जरूर लिख लीजिए. दिस वन यू हैव टू, इसको जो है हम लोग पूरा ही काट देंगे, क्योंकि ये कुछ लंबा चौड़ा ही हो जाएगा. तो ये पूरा प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पर काट देंगे, तो ये आपको लिखना है नहीं. हाँ, ये वाला जो है ये पूरा आपको लिखना है. इसके आंसर्स जो है आपको लास्ट में, ये वाली कोई ड्राइंग नहीं बनानी है. ये सारी ड्राइंग बनानी नहीं है, एक भी ड्राइंग बनाना नहीं है आपको. ये कोई ड्राइंग आपको बनाने की जरूरत है नहीं. आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको डायरेक्टली जो है ये वाला सीधा लिखना है. बस इतना लिख दो, ये हमारा यहाँ पर लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. यूनिट 9 पूरा कंप्लीट हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच.